इंफिनिटी को मिलाकर कार्निवोरा में इंट्रोड्यूस कर दिया। सेम इधर ह्यूमंस को लिया, होमो सेपियंस, होमो फैमिली बनाई, होमोनिडीज, होमो इसका जीनस बनाया, होमोनिडीज की फैमिली बनाई, प्राइमेटा इसका ऑर्डर बनाया, एंड देन क्लास मेमेलिया, कार्निवोरा, प्राइमेटा, मेमेलिया। That's too good. Now keep pots clean or family gets sick. ये है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए देखते हैं। तो स्पीशीज है सेपियन, सब स्पीशीज भी सेपियन है। जीनस क्या है? फैमिली होमिनिडी, होमिनिडी, फैमिली अपनी होमिनिडी, एंड ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, क्लास इसकी मैमेलिया, फाइलम इसका है कोर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। These are for human. Okay, that's correct. Now we're gonna study about housefly, which is called muscat domestica. So keep pots clean or family gets sick. यहाँ पे हम लेंगे मस्का, किसी को लगाएंगे मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका जो होती है अपनी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। जीनस इसका आएगा तो मस्का, मस्का ही इसका जीनस आ जाएगा, मस्किडी, मस्किडी इसकी फैमिली आ जाएगी। ऑर्डर इसका आएगा सबसे खतरनाक ऑर्डर, और वो है डिप्टेरा। क्लास इसकी आएगी इंसेक्टा, फाइलम इसका आएगा आर्थ्रोपोडा, 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 एंड किंगडम एनिमेलिया। So this is human, and this is the housefly. Now we're going to study this because this is most important. Like many things here, common name, biological name, genus. हमने man का पढ़ लिया, like sapien, homo, hominidi, primata, mammalia, chordata, animalia. Like वैसे ही हमने पढ़ लिया housefly का, musca domestica, musca, muscadi, diptera, insecta, arthropoda, animalia. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मैंगो के बारे में। So keep pots clean or family gets sick. तो इधर हम पढ़ेंगे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, इंडिका, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, which is called mango, which is called mango. मैंजीफेरा का जीनस मैंजीफेरा आ जाएगा, मैंजीफेरा। फैमिली इसकी हो जाएगी अनार्किडेसी, अनार्किडेसी। ऑर्डर हो जाएगा इसका सैपियंडेल, क्लास इसकी हो जाएगी डाइकोट, डाइकोटिलिडियन, डाइकोट, फाइलम क्या था? एंजियोस्पर्म, 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 सही बोला क्या? एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांटी। So that's correct. I'm 100% correct about that. Now we're gonna study about keyboards, cleaner, family, gets sick, about wheat. Wheat को बोलते हैं ट्रीटिकम, ट्रीटिकम, एस्टाइलम, एस्टाइलम, ट्रीटिकम एस्टाइलम, which is called wheat, 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 wheat.
जीनस है इसका ट्रिटिका, 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 ट्रिटिका। एंड पोएसी फैमिली हो जाएगी पोएसी। पोएल्स इसका, पोएल्स इसका क्या हो जाएगा? पोएल्स इसका हो जाएगा ऑर्डर। मोनोकोट, मोनोकोट इसकी क्लास। ये भी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है तो इसका फाइलम एंजियोस्पर्म। फाइलम नहीं याद आएगा, इधर याद रखना, डिवीजन आएगा। प्लांट्स में फाइलम नहीं आएगा, प्लांट्स में आता है अपना डिवीजन, किंगडम, प्लांटी। सो ये टेबल, ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो एडिटेड है, हमने इसको इधर से हटा दिया है, हमने इसको इधर निपटा दिया है, ठीक है। यही कर लिया, यही कर लिया, नेक्स्ट पेज पे। तो डन हो गया, शुरू हो देगा तो इतना तो पढ़ाया था। अरे पहला ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी करिए। नाउ इट्स टाइम टू रीड द एनसीईआरटी अबाउट दिस चैप्टर। Taxonomic categories, which is very important. So classification is not a single step process, but a hierarchy of steps to which each step represents a rank or a category. Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is the taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category refers to as a unit of classification. In fact, represents a rank and is commonly termed as a taxon, which is plural is not taxon. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example, which is that is an example. We don't know that. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs. It means insects are recognizable, concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of organisms? Maybe. Remember, group represent category. Category further denotes rank. Each rank or a taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups, categories, are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, or division. Kingdom, phylum or division, plants, class, then order, then family, then genus, and then the final species. All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category. Now the question you may ask is, how to place an organism in various categories? The basic requirement is the knowledge of characters of an individual of a group of organisms. This helps in identify similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as the other kind of organism. Now we going to study about species. What is species? Taxonomic studies consider a group of individual organisms with
be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera leo. All the three names, indica, tuberosum, and leo, represent a specific epithet, while the first word, Mangifera, Solanum, and Panthera, are genera and represents another higher level of taxon or categories. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms, but having morphological similarities. Each genus may have one or more than species specific epithet representing different organisms, morphological similarities only. For example, Panthera has another species epithet called tigris, and Solanum includes species like nigra and melongena. Human being belongs to the species sapien, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for a human being is written as a Homo sapiens. Now, genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera. दूसरे जेनेरा की स्पीसीज के अलावा इस जेनेरा की जो स्पीसीज है उसके साथ भी जो रिलेशन बनता है वो ज़्यादा नज़दीक होता है वैसे वाला. For example, potato, brinjal, makoi. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato, brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. Lion, leopard, tiger, with several common features, are all species of genus Panthera. This genus differs from another genus Felis, which include cat. Okay. Family. The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Because ये जैसे जैसे हम लेवल अप करते जा रहे हैं, कैटेगरीज हाई जा रही है, सिमिलैरिटीज कम होती जा रही है. कैट डॉग में सिमिलैरिटीज ज़्यादा थी, एनिमल प्लांट में कितनी ज़्यादा हो जाती है. तो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कैटेगरीज में ऊपर जाते जाते हैं, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, क्लास, लाइक दिस, तो सिमिलैरिटीज कम होती जाती है. तो वही बोल रहा है, The next category, family, is a group of related genera with a still less number of similarities as compared to the genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. ये इम्पोर्टेंट है. ये बोल रहा है कि इसका बेसिस क्या है कि भैया कैसे हमने डिफाइन किया कि ये सेम फैमिली में इंक्लूड करेंगे. तो बेस्ड अपॉन vegetative and reproductive features of plant species. Among plant, for example, three different genera like Solanum, Petunia, and Datura are placed in a family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, leopard, and tiger, is put along with genus Felis, which includes cat, in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. वो तो होना ही है क्योंकि species different है. They are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. Now, order. What is order? You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based upon a number of similar characters. Generally, order and other higher technical categories are identified based on the aggregates of characters. क्योंकि similarities उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है. Order being a higher category, it is assembled
assemblage of family which exhibit a few similar characters. वही यार, closely related families को order बोलते हैं. In similar characters are less in number as compared to different genera, including in a family. Plants families in like convolution, solanaceae. Convolution में आती है अपनी sweet potato, और solanaceae में आते हैं अपना धतूरा, पेटूनिया और सोलेनम में पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई. The plant families like convolution हो गई, solanaceae हो गई, are included in the order Polymonia family based upon floral character. Order किस पे आ रहे हैं? Floral character. Families किस पे थी? Vegetative and reproductive features पे. Order किस पे आ गया? Floral characters. जबकि genus और species किस पे थी? Similar morphological similarities होती है, उस पे आती है. The animals like carnivora including family, Felidae and Canidae. Class. Yeah, what is your class? So, my class is primata. कोई पूछे कि तेरी क्लास क्या है मेरे सामने, तो उसको बोलो भाई तेरी और मेरी क्लास सेम ही है, that is primata. So this category includes related orders. For examples like primata comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia. It says कि हमारा ऑर्डर जो है, ये तेरा ऑर्डर क्या है, तेरा मेरे सामने कोई ऑर्डर है कि नहीं है, तो ऑर्डर हो सकता है. बट क्लास पूछे ना, तो भाई पूछे कि तेरी क्या क्लास है भाई मेरे सामने, मेरी बहुत हाई क्लास है और तेरी बहुत लो क्लास है, तो उसको यही करो भाई तेरी क्लास और मेरी क्लास सेम है, और वो क्या है, वो है मेमेलिया. दोनों सेम ही क्लास में इंक्लूडेड है, और वो क्या है, वो मेमेलिया है. सो तेरी और मेरी क्लास कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. We are in a same class which is called Mammalia. Along with the order Carnivora that included animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also, which is Carnivora. Carnivora से आते हैं Felidae, Canidae. Felidae, Canidae से Felis canis. Felis canis से भाई Panthera और Felis. इधर canis में Panthera से फिर lion, tiger, leopard, इधर jungle cat, fishing cat, garden cat और उधर wolf, jackal और वगैरह. Then we will study about the phylum. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category. मतलब सारी चीज़ों को मिला दो, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका सालों को पकड़ के एक जगह है ऐसे. Classes comprising like animals, जैसे fishes को ले लिया, amphibians को ले लिया, reptiles को ले लिया, birds को भी ले लिया और mammals को भी ले लिया, सबको पकड़ के एक जगह और ऊपर चढ़ा दिया, एक हायर कैटेगरी में रख दिया. उस कैटेगरी का नाम क्या हो गया? फाइलम. उस कैटेगरी का नाम हो गया फाइलम. All these based on common features. वो इन सबको साथ में क्यों किया? क्योंकि इनमें प्रेजेंस होती है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड होती है डोर्सल साइड में, ये अपना वेंट्रल साइड है, वो नहीं पीछे वाला डोर्सल साइड है. तो डोर्सल साइड में बोलो न्यूरल सिस्टम होता है, वो प्रेजेंट होता है शायद नहीं प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन ए सेल एंड इंक्लूडेड इन फाइलम कोर्डेटा. और सबको मिला के एकदम फाइलम कोर्डेटा में चिपका दिया सबको. जैसे फिशेस को ले लिया, एम्फीबियंस को ले लिया, रेप्टाइल्स को ले लिया, बर्ड्स को ले लिया, हमने मैमल्स को पकड़ लिया, टेट्रापॉड्स को पकड़ के एक जगह कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है सबके. नोटोकॉर्ड क्या है? डोर्सली होलो न्यूरल सिस्टम होता है, वो प्रेजेंट होता है. सो और हमको एक फाइलम में डाल दिया और फाइलम का नाम रख दिया कोर्डेटा. In case of plant, classes with a few similar characters assigned a higher category called division. इधर
के लिए फाइलम आएगा, लेकिन प्लांट्स के लिए इधर फाइलम नहीं आएगा, उधर डिवीज़न आ जाएगा। इसमें भी सिमिलर क्लासेस को ज्वाइन करके जो बनता है हायर कैटेगरी, उसको डिवीज़न बोलते हैं फॉर प्लांट्स। नाउ द फाइनल is kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the higher category kingdom. Animalia in the classification system of animals. अब जितने भी एनिमल्स हैं, कोई भी छोटे से छोटा, इतने से लेकर इतना तक, जितना भी है सबको पकड़ के एक जगह कर दिया और उसको एक कैटेगरी में रखा, जिसको बोला किंगडम। सारे एनिमल्स को पकड़ा एक जगह रखा, बोला किंगडम, यह किंगडम। सारी क्लासेस को इकट्ठा करके बोला किंगडम, नॉट क्लासेस, फाइलम को इकट्ठा करके बोला रखा किंगडम। इधर सारे डिविजन्स को, प्लांट्स के डिविजन्स को कलेक्ट करके रखा, बोला किंगडम। और इसको किंगडम नाम दे दिया, एनिमल्स को एनिमेलिया और प्लांट्स को प्लांट। सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। The kingdom plant, on the other hand, is distinct and comprises all plants of various divisions. सारे divisions से पकड़ के यहाँ रख दिया kingdom। kingdom कौन सा kingdom? Animals के लिए kingdom animalia, plants के लिए plant। The kingdom plant, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Yes. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant area. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy of 1.1. There is 1.1. This is the, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Can you recall the basis of organic? Yes. Species, then species, genus, family, order, class, and then phylum and kingdom. ये होता है animals के लिए, plants के लिए species, genus, family, order, class, division, and then kingdom. It's easy to recall because ज़्यादा टफ नहीं है। Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decrease. पहले ही पढ़ा था, जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज ऊपर जाते हैं, सिमिलैरिटीज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मैं और जैसे ह्यूमंस और गोरिल्लाज जो भी हैं, चिंपैंजीज हैं, वो थोड़े थोड़े कॉमन फीचर्स डिवाइड करते हैं, पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, होमो सेपियंस से फिर होमोनिडी से फिर प्राइमेटा, फिर जाके मेमेलिया के बाद अपना कोर्डेटा के बाद अपना जाकर एनिमेलिया, फिर जाकर एनिमेलिया और प्लांटी मिलकर लिविंग बीइंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, जिसमें और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटीज डाउन होती जाती है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्ड विद द टैक्सा। जितनी ज़्यादा नीचे की कैटेगरी होगी, सिमिलैरिटीज उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे डॉग और कैट में सिमिलैरिटी ज़्यादा है, या फिर प्लांट और एनिमेलिया, प्लांट और एनिमल, तो ऑफ कोर्स कैट और डॉग में थोड़ी सिमिलैरिटी ज़्यादा है। टेट्रापोड्स हैं एंड मैमल्स हैं लाइक दिस। और हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर द साइन, greater is the difficulty to determine the relationship of the other taxa at the same level. जितनी ज़्यादा ऊपर की कैटेगरी होगी, उनमें सिमिलैरिटीज फाइंड करना उतना ही टफ होता है। Hence the problem of classification becomes more complex. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज ऊपर जाते हैं, जैसे स्पीसीज किंगडम, तो जो डिफ़िकल्टीज है वो बढ़ती जाती है, और जो क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रॉब्लम है ना, वो और भी कॉम्प्लेक्स होती है। इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमी, तो ये टेबल है, अब ये टेबल है क्योंकि बहुत
indicates the taxonomic categories to which some common organism like housefly and feet. So मैथ का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस. सो मैथ का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है, जीनस होमो होता है, फैमिली होमिनिडी होती है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास में मेलिया होती है, फाइलम डिवीजन होता है, कोर्डेटा होता है, देन आ जाता है एनिमेलिया. उधर ये हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्किडी, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, क्लास होती है इंसेक्टा, फाइलम होता है अपना आर्थ्रोपोडा एंड देन एनिमेलिया. मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंजिफेरा इंडिका, जीनस मैंजिफेरा, फैमिली अपनी अनार्किडेसी, ऑर्डर अपना सैपियनडेल, क्लास अपनी डाइकोटिलिडियन, फाइलम अपना एंजियोस्पर्म. वीट ट्रिटिकम एस्टाइबम इसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडियन एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म. इट्स नॉट दैट टफ टू रिकॉल बिकॉज एक दो बार पढ़ने के बाद याद हो जाती है. क्वेश्चन अचानक उठा लेंगे. हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा है. हाउस फ्लाई की क्लास क्या है? क्या है क्लास? इंसेक्टा है. मैंगो की फैमिली कौन सी? मैंगो की फैमिली कौन सी? अनार्किडेसी. होमो क्या? मैन ह्यूमंस की फैमिली कौन सी है? होमिनिडी. हाउस फ्लाई की फैमिली कौन सी है? तो बता देंगे हम मस्किडी. ऐसे ही. So now it's time to question practice. The most important thing is revise. Revision is the most important. With question practice becomes preparation all good. So we will rock it. This. Watch me. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, रैंक और टैक्सोनॉमी सभी यूनिट ही है. अब विच इज द एसेंशियल एंड इज ए प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज प्लांट एंड एनिमल. कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन इज द एसेंशियल थिंग. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स constitute in the same category called phylum. फैमिली ऑर्डर ट्रिटिकम स्टाइल फैमिली पोएसी होती है और पोएल्स होती है. इसका 57 में से क्या सही है? द फैमिली convolution and solanaceae are included in the order Polygonia mainly on the basis of order. फैमिलीज को तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स से हम डिस्टिंग्विश किया था. ऑर्डर को शायद फ्लोरल कैरेक्टर से डिस्टिंग्विश किया. तो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी को तो नहीं हो सकता, फ्लोरल कैरेक्टर हो सकते हैं. तो 59 में था. आई होप सही हो. 59 था एंड दैट इज करेक्ट. The word ending with ACE indicates
anarchidaceae एंड पोएसी। ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स की फैमिलीज को। 61 में सेकंड। ऑर्डर पोलिनोमियल इंक्लूड्स सोलेनेसी एंड कोलमोलियोसी। वो है 1 2 63 में 63 थर्ड। Poales is the order of mango, wheat, housefly or humus. So Poales is the order of wheat. Housefly का हो नहीं सकता, मैंगो का हो सकता था, पर क्यों? मैंगो का तो ऑर्डर अपना सेपिंडल होता है, ह्यूमंस का प्राइमेटा होता है, हाउसफ्लाई का जो है टेरा होता है। तो बचा क्या? व्हीट। The order generally ends with the suffix ac. Order देखो, अनार्किडेसी, होमोनिडी, आईडी ऐसे करके तो वो तो फैमिलीज है। इधर बोल रहा है फैमिली से ऊपर वाली बोलो ऑर्डर। तो ऑर्डर जैसे पोएसी, पोएल्स, ELES, पोएल्स, एल्स आ जाएगा। सेपिंडेल्स, तो ये आएगा 65 में फर्स्ट। Which of the following categories poses least number of related characters? कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सबसे कम सिमिलरिटीज वाले रिलेटेड कैरेक्टर्स रखती है? तो वो सबसे ऊपर वाली होगी। और इसमें सबसे ऊपर वाली देर की 5 सेकंड हो जाएगा। सही है। Two animals belonging to the same kingdom but different classes, they may belong to the same। दो एनिमल्स है, बिलोंग कर रहे हैं सेम किंगडम से, पर क्लासेस अलग अलग है। तो सेम क्या हो सकता है इसमें? क्लास और किंगडम के बीच में क्या आता है? फाइलम। और इधर 2 एनिमल दे रखा है। अगर यहीं पे 2 प्लांट्स दे रखा होता ना तो फाइलम की जगह डिवीजन आता, क्योंकि ऑप्शन में डिवीजन और फाइलम दोनों दे रखा है। तो 2 एनिमल्स पूछा है, और एनिमल्स का फाइलम बोलते हैं, एनिमल्स के डिवीजन नहीं बोलते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को हम फाइलम बोलते हैं। सो यहाँ पर 71 का फर्स्ट करेंगे एंड दैट इज करेक्ट। और द विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स इंडिकेट टैक्सोनॉमी कैटेगरी फैमिली। फैमिली को हमने देखा था क्या? AC, अनार्किडेसी एंड क्या बोलते हैं, पोएसी। राइट। तो 72 में एनिमल्स के लिए पूछ रहा है, गलती मत करना है, एनिमल्स के पूछ रहा है ना, एनिमल्स के। सो क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स इंडिकेट टैक्सोनॉमी कैरेक्टर ऑफ फैमिली। जैसे कि अपने देखा फैमिली होमोनिडी देख लिया, मस्किडी हो देख लिया। सो ए दे रखा है, एल्स दे रखा है, AC दे रखा है, मस्किडी। आई थिंक लास्ट में सिर्फ ए ही होगा। 72 में फोर्थ कर दूँगा, करेक्ट। पर मैं टिक नहीं लगूँगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बार बार कहता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग, इस बार इसमें टिक नहीं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी रेफर्स, ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आउट ऑफ NCERT है ये क्वेश्चन। नाउ वी फैमिली ऑर्डर और क्लास बताओ इसका डोमेस्टिका की। फैमिली मस्किडी है, ऑर्डर अपना डिप्टेरा होगा, क्लास अपना इंसेक्ट होगा, फिफ्थ सेकंड के 5th में। तो एकदम सही होते हैं, मोस्टली सही होते हैं, पढ़ेंगे तो नहीं होंगे क्या, माथा ऐसे थोड़ी दिखाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स?
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। जीनस में आएगा अपना सोलेनम, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सोलेनम। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन रिप्लेस मेमेलिया। मेमेलिया जीनस थोड़ी है भाई। सोलेनम, पट्यूनिया, धतूरा ये जीनस थोड़ी है। सोलेनेसी तो फैमिली आ जाती है। मैंजिफेरा एंड पैंथेरा बिलोंग टू द सेम जीनस ट्यूबरोसा। हाँ भाई गलत, पहला होगा आठवां पहला ही है। एंड अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर व्हीट। व्हीट देख लेते हैं एक बार। ट्रिटिकम एस्टाइगम, जीनस था ट्रिटिकम, फैमिली थी अपनी पोएसी, ऑर्डर था अपना पोएल्स, क्लास थी मोनोकोट, एंड फाइलम जो था, फाइलम नहीं बोलेंगे डिवीज़न बोलेंगे, वो क्या था अपना एंजियोस्पर्म, किंगडम जो था वो था प्लांटिकम। सो जीनस ट्रिटिकम, फैमिली एनार्किडेसिया भी गलत हो जाता है। जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास यहाँ पे डाइकोट हो जाती है तो गलत हो जाता है। जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर सैपिटल यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडिया। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस टैक्सोनॉमिक स्टडीज ये नहीं है। फिल इन द ईच में है ईच जीनस। सो यहाँ पे हो जाएगा 13 में सेकंड, 13 में हो जाएगा सेकंड। बड़ा क्वेश्चन था और इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल बायो सिस्टमैटिक नेम्स टू जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन लैटिन वर्ड्स है। And genus name is immediately followed the name of taxonomist who described it first. Generic name must begin with ये भी सही है। All letters in the specific epithet must 14 में सर्टिफिकेट मिलेगा। कर देंगे नहीं है लेकिन अपन का हेस कर देंगे। Biosystematics aims for identification many purposes. Which of the following statement about classification is true? Not true. Members of family are less similar than members of including genus. ये तो सही है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं सिमिलरिटीज फैमिली क्या है ऊपर वाली क्या रखती है, जीनस नीचे वाली है तो एब्सोल्युटली लेस सिमिलर होंगी। And order has more numbers than the number of members and including genus. ऑर्डर में मोर मेंबर्स होते हैं देन मेंबर्स इंक्लूडिंग जीनस सही है, क्योंकि जीनस में जैसे कुछ स्पीसीज होती है, ऑर्डर में तो बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं। तो यस ये भी सही है। फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइला। फाइला से भी ज़्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे देखी है ऐसा? तो सी तो आने वाला है। तो जब क्वेश्चन में दे रखा है कि ओनली सी ओनली डी ओनली, तो हमने देख लिया सी गलत है, सी गलत है और एक नन ऑफ दीज दे रखा है, तो सी गलत आ चुका है। तो मतलब सोलह में पहला सही है, सोलह में पहला वो सही भी है। पर यहाँ पर बात ये है ना कि क्वेश्चन कितना शानदार दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू। कौन सी गलत नहीं है, कौन सी गलत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। हम जो गलत होती है वो जेब क्या आती है, इसमें बोल रहा है जो गलत नहीं है वो गलत नहीं है, नहीं जो सही नहीं है। गलत नहीं है तो वो तो हम सभी देख लेते हैं, जो गलत नहीं है वो बताओ। यहाँ बोल रहा है जो सही नहीं है वो बताओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे घुमा के दिया देते हैं वो दिक्कत कर देता है। सो
We will meet next day with the very best study with me class, and here's the day 18 of 395. बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।